Hello everyone. In today's lecture, I'll be dealing with a very common question of the aspirants. Many of you have WhatsApped and emailed me regarding the relevance of coaching in success in civil services. So there are a lot of myriad myths regarding the importance of coaching, especially in a world where there is information overload. Almost anything and everything you are finding it over the internet. Okay, so today's topic for discussion would be relevance of coaching in success, okay, for the civil services. Is coaching indispensable for success in civil services? Very common question. जदि मु सिविल सर्विसेस रे सक्सेसफुल होवा पई चाहूची ताहले मते कोचिंग निहाती भाबरे नबा पई पड़िबो की? So the answer would be obviously no. Okay, it is not indispensable. No one can coach you to get success in civil services. What maximum can be done is to provide the direction, to provide a kind of mentorship. Okay, so let us see the pros and cons of taking coaching, and also I'll just recap in the previous lecture what I had said, that success in civil services basically depends on the 3 P's. Okay, the first P stands for patience and perseverance. Okay, patience and perseverance is that when you start preparation for civil services, it may not be so that you will be able to grasp everything. Okay, so the first 1 month, 2 months or 3 months will be a testing time. That is the most important period. You should not quit in that period. Okay, many people generally after 3-4 months of preparation, they find that okay, it's very hard for me, so maybe I'll think about something else. No, first 3-4 months it's fine because there are so many papers to cover and all. If you follow a proper plan, if you go have a proper planned approach, okay, then you can easily get through these initial 3-4 months, and then it will be a relatively stable path to walk on, right? So we'll discuss that, what are the phases and what is to be done. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, IAS ହଉ କିମ୍ବା OS ହଉ, ପ୍ରଥମ 2-3 ମାସ କି 4 ମାସ କିଛିଟା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ପ୍ରଥମେ ସେଟା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନି ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପରସିଭେରାନ୍ସ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ନିହାତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନରେ ନୁହଁ। ଆପଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସ୍, ତ ସେଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ମିଳିବେ, ତେଣୁ ପେସେନ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଦରକାର। ଓକେ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଯଦି କାମ ଗୋଟେ ହେଉନି ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରପରଲି କରିପାରିବି ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏରେ, ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଏରେ। ସିମିଲାରଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ରେ ମୋର ସ୍କୋର ଭଲ ଆସୁନି, ମୁଁ એટલે ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋର କ'ଣ ଲ୍ୟାକ୍ୟୁନା ଅଛି। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିକି ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟର ଦେବାର ଅଛି। ସୋ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପରସିଭେରାନ୍ସ। ଥରେ ନ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ମେଣ୍ଟରକୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ରିପିଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଗେନ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫେସିଂ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଇଟ୍ସ ବେଟର୍ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅ ୱେ yourself, and it is only in the last stage where you are unable to meander around the problem, then only you should take help of your mentor. Okay, so that gives you a lot of experience, that repeated the times you are repeating and trying to solve your problem. Okay, that is going to give you a lot of experience in handling, okay, how you have to plan properly, right? So that is the first, patience or perseverance. Second P, again very important, is planning. You need to plan. Okay, and the plan should be achievable. Okay, it should not be like
absolutely out of the world plans. For example, if someone says that I'll finish a polity book in 4 days, okay, you may read it in 4 days, but what are you going to understand, right? So this is also very important, planning, and the planning has to be achievable. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବପର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର କି ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ସାରିବି, সেটা ডিপেন্ড ବି କରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଅଛି। ଯିଏ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସମୟ ଟିକେ କମିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେତେ ସମୟ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୟୁଟୋପିଆନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ 10ଟା ଚାପ୍ଟର ଆଜି ସାରିଦେବି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ସାରିପାରିବେନି ପ୍ଲାନ୍ଟା? 3ଟା ଚାପ୍ଟର ସରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଗନି ରହିଯିବ, ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି 10ଟା ଚାପ୍ଟର ସାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3ଟା ସାରିପାରିଲି। ସୋ ମେକ୍ ଏ ଆଚିଭେବଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଓକେ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଟୁ ଲାକ୍ସ ଅର୍ ଲେଜି, ଏମିତି ନାହିଁ କି 7 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି out of the world kind of plan. Okay, what is achievable depending on the resources you have. Resources means time you have with you. Okay, so that is your planning. And third P, most important, that is practice. Okay, you have to practice properly. Test series debe. Nowadays test series are available, okay, of all the major institutes. You can get it over the internet, in the Telegram groups, the WhatsApp groups, okay, over the web. So you have to take it and you have to practice, okay, depending on your preparation. So many, good question sets you are getting. These things were not available, let's say, before 5 or 6 years. Now it is it's available and it is accessible also. So even sitting at your home, you can prepare very well, okay. So let us now go to the fundamental question and the central part of this particular video: success in civil services without any coaching. First question, is it possible? Of course it is possible. Many examples have been there. So as I told you, no one can coach you for civil services. ଆପଣଙ୍କୁ civil services ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କେହି କୋଚିଂ ଦେଇପାରିବେନି। 99% ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ 1% ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର, ସେ ବାଟଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। 6-7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବହି ଘରିକା ମେଟେରିଆଲ ଘରିକା ସେଗୁଡ଼ା ମିଳୁନଥିଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଓଲ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓଭରଲୋଡ୍। ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ରେ ଏତେ ବହି ଅଛି, ଏତେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଏତେ PDFs ଅଛି, କେଉଁଟା ତା ଭିତରୁ ଭଲ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ପିଲା ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଛନ୍ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବହି କି 100 ଥର ପଢ଼ିବେ, okay, rather than 100ଟା ବହି ଆଣିକି ଥର ପଢ଼ିବେ। So you have to read one book 100 times. Take the best book, most standard book. You are not here to get PhD, or get a very in-depth, okay, academic knowledge. Here basically working knowledge is required from the exam point of view. ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଓକେ। ତ ସେଇଟା ଘରେ ବସିକି ବି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେତେ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ବାହାରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଉନି ତାହେଲେ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯାଉଛି କି? ମୋର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ନା, ସେଥିରେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କମେନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 99% ପର୍ସପିରେସନ୍, ଝାଳଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ବହିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 1% ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମେଣ୍ଟର ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଓକେ। ସେ ଖାଲି ବାଟଟା ଦେଖେଇବେ, ଚାଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଘରେ ବସିକି ବି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି କି କୋଚିଂ ନ ନେଇକି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ। ତ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ତାକୁ ଯିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ଓକେ, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର, ଓକେ, ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କୋଚିଂ। ସୋ 3 steps you have to take. You have to be sincere with you. So let us see what are the steps what are required. First step, okay, that is obviously planning and all those things, okay, the rudimentary steps that I am coming to directly how you have to make your daily timetable, right? And it depends on how much time you can devote. Suppose someone can devote 5 minutes, someone can devote 1 hour. So their planning will vary. Someone can devote 8 hours, okay. Their planning will vary. ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ? ଏ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ will be able to give 3, 4, 6 hours maximum per day, okay. But someone who is preparing full time may even give more than that, 10, 12 hours, right?
although human brain won't register. Okay, if you keep on studying for 12 hours, like people say we study for 12, 15, 18 hours, they're not studying the entire time. The thing is that, okay, you study for 4, 5 hours, okay, and then you have to practice, you have to write, you have to give tests, okay, those things are there. So together if you put it, it comes around 10, 12 hours, right? The first thing is textbooks. Now, in previous lecture I have told you the books which are required for the exam, okay, so the book list basically. I'll have a separate video in which I'll give an exhaustive book list of again, but already it has been done, okay. So first concentrate on textbooks. I generally see even in the classroom program there are many students who are interested in coaching center material which are basically thrash material, means they are basically cut short material from the textbook, okay. Excuse me. So basically if you start with those kind of material, your fundamentals will not be strong. So always depend on the textbook. Textbook ta टिके अधिका समय न पढ़िया पई, किंतु थरे जदि मु बुझी गली ताहले मते बहुत सुविधा सेटा हबो, ठीक अछि। तेनु टेक्स्टबुक डिपेंडेंट निहाती भाबरे आपनको हबार अछि। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन टेक्स्टबुक। टेक्स्टबुक पढ़िबा केमति, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ studying the textbook. So when you are going for the first time reading, it has to be exhaustive reading, including the footnotes and all also you have to study. You have to underline that. Once you underline those things, depends on how much time you have. If you have a lot of time, then you can make your personal notes out of the important parts that you have underlined. So when next you go for revision and all, you don't go for the book, rather you go for the notes. But then everyone does not have that luxury of having that kind of time. So in case you do not have that kind of time, then the best thing for you is you underline or highlight, right, okay, in the textbook, and when you go for your revision, just you have to go for the highlighted parts, okay. So no need of making notes and all. That time you can devote for test series and all. So first, textbook. Proper textbook, buy a proper textbook, study that textbook, first finish the textbook in detail, okay. Tenu jo mane प्रथम प्रिपरेशन कर निजे प्रिपरेशन कर घरे बसिकी आपण सीधा से कोचिंग सेंटर मटेरियल की थ्रैश गाइड आनिकी पढ़िया आरंभ कर दियंतु, जो गाइड रे सब एका संगे थिबो, सब सब्जेक्ट गोटे बही पढ़ाउथिबो हैला, सेटा हेले कोन ना आपनकर लिमिटेड नॉलेज रहबो। तेणु आपण टेक्स्ट बुक आनंतु, जोटा बेस्ट टेक्स्ट बुक रहउची, स्टेट सिविल सर्विस हो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेस हो, जहाँ भी आपनको कॉन्सेप्ट क्लियर करिया पे टेक्स्ट बुक आपनको धरिबार अछि। सेटा समय नबो, गोटे टेक्स्ट बुक भलरे सारिया पे काको 15 दिन लग पारे, काको मासे लग पारे, काको 2 मास भी लगी पारे, किंतु टेक्स्ट बुक ता प्रॉपर्ली पढ़िबार अछि। से थरा अंडरलाइन कर देबे, जहाँ पाके बहुत समय अछि से नोट्स भी बनै पारन, से तो किछि निजर ऐड करिके, ओके। किनो अंडरलाइन के हाइलाइट कर देले जेतरो फुनी पढ़िबे, हाइलाइटेड पार्ट थर थर पढ़ि देले सब बडा मन पड़ जिवो। तेणु प्रथम रिडिंग टा जो टेक्स्ट बुक रो करिवे सेटा पूरा टेक्स्ट बुक टा पढ़िबे, तार फुटनोट सहित सेटा प्रॉपर्ली पढ़िबार अछि। ता भितर अपन जानि परले एटा इंपोर्टेंट, सेटा अपन अंडरलाइन करके पढ़, ठीक है। एटा हला स्टेप 1। तेणु टेक्स्ट बुक तो सरला। अच्छा, ये जो मुझे टेक्स्ट बुक टा सरीबो ता माने एमति न कि पूराटा सरीबी, चैप्टर वाइज यू हैव टू रिवाइज। केमिति रिवीजन करिवे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्राय जदि आपण भलो टेक्स्ट बुक किनुचंदी सेटा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देता है। जदि न देछि आपण जो बुक फॉलो करछन त देइनी, बुक लिस्ट अगेन ऑलरेडी मु कहिछि, मु आउथर भी कहबे सेटा। किंतु जदि आपण 8 सेकंड स्टेज को जाउछन जोठी कि आपण टेक्स्ट बुक रे गोटे चैप्टर सरीला, नेक्स्ट मु कोन करबी, नेक्स्ट हला प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस हला। आपण यूपीएससी पई प्रिपेयर करंतु कि ओपीएससी, मु जा जानि प्राय पिला बोथ पई प्रिपेयर करंती। आपण यूपीएससी में प्रिपेयर करचंदी ताले न्यू विशाल पब्लिकेशन रो कि ओ पब्लिकेशन रो मेंस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो मिलुची, ओके। तो सेहीटा एबे जोड़ा रिसेंट एडिशन तार अछि 1979 रो 2017 पर्यंत अछि, आ से चैप्टर वाइज देतो। दांत आपण हिस्ट्री आरंभ कले, ओके, हिस्ट्री आरंभ कले तो फर्स्ट आपण यू स्टार्ट फ्रॉम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जोड़ा। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस ऊपर केतेटा क्वेश्चन पड़छि से चैप्टर ऊपर, सेटा से चैप्टर वाइज देछि। गोटे चैप्टर सारिबे, से क्वेश्चन उडा सारिबे, ताको आपण जे मेंटर अछन ताको इवैल्यूएट करिवे। इवैल्यूएशन टा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप रो ए नो कि क्लास रे पढ़ेबे, से जहाँ क्लास रे पढ़ाबो सेटा आपण यूट्यूब रे भी पढ़ दे परिबे, बही आनी कि निजे पढ़ दे परिबे। इवैल्यूएशन टा सबटू इंपोर्टेंट पार्ट आपण जोटी कोचिंग जाउचंदी, मेंटरशिप नउचंदी, इवैल्यूएट केमिति करा होची ओ किए करा होची। जदि मु गोटे भूल जिनसोटे लिखुची ताहले मोर जे मेंटर अछंती से ताको ठीक करिवा कथा।
से यदि ठीक करूना मोर भूलटा रिपीट होटा हैबिट हो जोटा कि मतलब आगे असुविधा पकेब ठीक अच्छे तेणु इवालुएशन प्रॉपर हबार अच्छी जदि आप निजे ही प्रिपेयर करूँ कैम स्कैन करके जो आप आंसर लिखुं गोटे से मत भी पठे पारे मुझे ओके जहाँ आप करेक्शन कराया कथा करेक्शन करके आपको फीडबैक दे दे पारे तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू गेट दैट बुक Amazon फ्लिपकार्ट रे अवेलेबल अच्छी लोकल स्टोर से भी आप खोजी पारे ओके सेटा प्रीवियस ईयर मु मेंस कथा कहूँ मेंस क्वेश्चन ओके मेंस क्वेश्चन कहीं देखो प्रिलिम्स टा बेसिकली आप जो बहुत गुड़े टेस्ट देवे कहीं कॉन्सेप्टा एका कंटेंट रोची ता प्रेजेंटेशन स्टाइल टा टिके अलग रहइबो प्रिलिम और मेन रे तेणु प्रथम दिन रु मेन स्पेसिफिक हेले आपनको प्रिलिम्स टा सहज हबो ओके तेणु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा मु जो कहूची दिस इज बेसिकली मेंस एंड यूपीएससी इवन इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर ओपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन एटा करंतु ओके तेणु ताहले आपनकर कोन ना लैटरल थिंकिंग भी पड़िबो थिंकिंग पावर आपनको पड़िबो आपन सब सुविधा हबो ओके तो एटा हला सेकंड स्टेज बहुत इंपोर्टेंट तो गोटे चैप्टर सरला मोर सेमती गोटे चैप्टर सरला गोटे चैप्टर सारी से चैप्टर कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेगुड़ा मु सारी ओके दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन सरी गला मोर गोटे सब्जेक्ट सरला तापर टेस्ट सीरीज मु देबी से बही पछरे बहुत गुडा बही पछरे चैप्टर वाइज टेस्ट थाए से टेस्ट भी देबी राइट थर्ड हला आपनकर टेस्ट सीरीज जिते मेजर टेस्ट सीरीज सब ओपनली अवेलेबल इन मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स नेट रे भी अवेलेबल आपन देखंतु जोटा आपनकर बेस्ट लागुची तार सॉल्यूशंस भी रहउची आपन एमिति परफेक्शनिस्ट टाइप रो एटीट्यूड रखंतुनी कि मु सब सारिला परे टेस्ट सीरीज आरंभ करबी okay you need not wait for the completion of the full course to start the test series lots of test series are there which are openly available and accessible you get those test series and you start giving even if you have not studied that part then what a graph upon maintain you maintain your graph first week second week so at least 2 to 3 tests you can give out of that in a month that you can give 2 CSAT tests also okay so test series both prelims and mains and you prepare for prelims and mains simultaneously हला एमती नहीं प्रीलिम ता सरी जो रिजल्ट बाहर जो तापर मेन पे प्रिपेयर करी हार्डली 2-3 मास थिबो किछि प्रिपेयर करी हबन so simultaneous preparation of prelims and mains along with the test series that you're going to give that also should be prelims and main okay and so that if your writing skills there are any lacuna in your writing skills you can make up for them तो एई तीनटा स्टेप जदि हमें ओके फॉलो करिबा ताहले मोर और लेस निजे ही हमें प्रिपरेशन करके बढ़िया रैंक हमें रख पारिबा निजो घर छाड़ी आसिया दरकार नहीं कोठी जाएगी कहीं ना बाहर जाए अपन रहिबे सेठी अदर external factors will also influence the preparation आपनको विल पावर बहुत स्ट्रांग थाई पारे सेठी external factors for example climate हैला सेठी आपनको रूममेट्स किमती अछंती आपन खाइबा पे कोन मिलछु दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग ओके पिला मानको देह खराब हो जे 3-4 मंथ्स पर कहीं ना इतले तांकर खाइबा पानी अडा सब बदलछु तो घरे रहि कि हम आराम रे पढी कि वी कैन क्रैक ठीक अछि तो सेमती किछ नै कि बाध्यतामूलक गोटे पर्टिकुलर जगह को जिया पे पडिबो राइट आउ गोटे मेन जिंस जोटा कि हमर जतला हम निजे पढुछु that we can do that is a peer group okay now this is je janga pakhar achi to bahut bhalo katha okay a peer group peer group mane hela sango mane jo mane preparation koruchandi okay so if you can get a peer group minimum of 2 people maximum of 3 if it is more than 3 it becomes a crowd okay 3 रो अधिक हला असुविधा सुविधा किछ होबन असुविधा हो तेनु similar standard रो similar चिंता धारा रो हेथिवा दरकार okay if you are choosing a study group of 2 to 3 people are studying minimum 2 maximum 3 then your standard and your okay sincerity should match it shouldn't be that someone is like he will study something in secrecy and he will try to bog down the other two okay तेणु जोटा कि बहुत टाइम में आम देखा पाचु कि प्रिपरेशन बेले पिला कौन करते आप बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि केवे कहबेन कि मु प्रिपेयर कर सिविल सर्विस ओके तेणु सेमिति ताठू बेटर निजे ही पढ़े किंतु भल पिला मिलुचंदी यू कैन हैव ए पीयर ग्रुप दिस इज आई थिंक द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड भुवनेश्वर और एनी अदर प्लेस इन इंडिया नाउ बाकी सब जिन तो ब्रिज हो गलानी एटा गोटे जिनस रोची पीयर ग्रुपटा सेठी आप बहुत पिला प्रिपेयर करछंदी पीयर ग्रुपटा मिल जिवो एठी आपन खोजिया पड़िबो आ एठी टिके सिंसियर पिला आपन खोजिया पड़िबो जे कि प्रॉपर्ली इनपुटटा देबे आ गोटे एडवांटेज कोन पीयर ग्रुप रो जदि गोटे पिला ता भितर क्रैक करूची इट इज जनरली सीन द एंटायर ग्रुप से वर्ष हो कि ता नेक्स्ट ईयर हो से समस्त पाई जान ओके सो
peer group again it is optional, depends on whether you are getting such kind of people or not hela kintu ei tinta mandatory step apna nabar ach textbook chapter सरीला previous year mains question करली लेखिली मो मेंटर को देखैली जदि मेंटरशिप अवेलेबल नाही आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू मते सेटा कैम स्कैन करके आपण पीडीएफ रे पठे दे परिबे तापरे नेक्स्ट आसला टेस्ट सीरीज once I am ready with a subsection or a section or the entire paper then I will take the test series which are openly available ठीक अछि तेनो एही तीनटा जिंस करी घरे बसी म आराम रे प्रिपेयर करि पारि मते देखिबार छ म ग्राफटा बढुची कि नै ओके सेटा गोटे जिंस आपण सब टेस्ट देबे सेतल देखियो आपण मार्क्स केते आसुची प्रीलिम्स रे भी और मेंस रे भी ओके जदि आपण गोटे ग्राफ टे प्लॉट करिवे ताले इनिशियली आपण को मार्क टा बढ़ी बढ़ी जीवो गोटे टाइम आसीबो सेटा ऑलमोस्ट स्टेबल हे जीवो जेतर से स्टेबल हे गला दैट मींस यू हैव रीच्ड योर पीक ऑफ परफॉर्मेंस ताठू आउ टिके जदि बढ़िबो बहुत आपण जदि परिश्रम करिवे ताले आउ टिके बढ़िबो ओके सो these three steps and the fourth one if possible अपन जदि आको properly time कले ताले you can easily succeed okay staying at your home the security and comforts of your home तापर अलगा भी बहुत video classes और एगुडा भी बहुत coaching centers launch करूचंती तो that also you can okay take advantage of as such भी जदि बहुत जन कोनते हमर financial constraints अछि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अछि जदि गोटे जिंस होला अपन YouTube रे प्राय सबु ऑप्शनल इंक्लूडेड प्राय सबु जिंस रो वीडियोस पाइ जिवे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रो तांकर ओपन स्कूल अछि सेमती ऑक्सफोर्ड रो भी बहुत बड़ बड़ यूनिवर्सिटीज जनरल कॉन्सेप्ट्स ऊपर तांकर ओपन वीडियोस रो दैछन्ती इवन इंडिया रो भी बहुत गुडे सेमती वीडियोस अछि त अपन ओपनली भी बहुत गुडे जिंस जानि पारिबे जदि अपन से वीडियोस रो देखुछन व्हिच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ओके तेनो these three things you just remember second टा हला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथमटा देखिबे टेक्स्ट बुक डिपेंडेंट होंदो टे कष्ट लागियो प्रथमे बट इट इज द श्योर वे टू सक्सेस ओके डोंट डिपेंड ऑन द थ्रैश कॉपी पेस्ट मटेरियल प्रॉपर बेस्ट टेक्स्ट बुक पढंतु जो डोमेन रो आपण अच्छा एबे गोटे क्वेश्चन हला बेस्ट टेक्स्ट बुक कोटा आपणक पई गोटे बेस्ट हे पारे मो पई गोटे बेस्ट हे पारे आउजन पई गोटे बेस्ट हे पारे बट जनरली मैक्सिमम पिला जोटा जनरली पढंती एडवाइस जोटा करा जाए से टाइप रो बुक पढंतु तार गोटे लिस्ट मु लास्ट वीडियो रे देइथिली मु गोटे स्वतंत्र ता पई नेक्स्ट वीडियोटा करबी जोटी कि ओपीएससी पई अलगा यूपीएससी पई अलगा टेक्स्ट बुक कोन रहबा कथा सेटा हमें डिस्कस करबा नुवा नुवा बहुत टेक्स्ट बुक भी आसुची से गुडा भी हमें एक्सप्लोर करि परिबा ओके सो दिस इज बेसिकली योर टेक्स्ट बुक सो ऑलवेज बी टेक्स्ट बुक डिपेंडेंट प्राइमरी नॉलेज ता हला परे ता परे आपण ता दिरु ओके आपण जानि परिबे कि कोटा मते छाड़ देबार अछि कोटा मते आपको नबार अछि सो इनिशियली टेक्स्ट बुक हैज टू बी स्टडीड ओके extensively out of that then in the second and third and subsequent readings you may only concentrate on the important aspects okay then once you finish a chapter previous year questions write it okay mains prelims previous year question also you should do but again tar the answer diya to apna jani paribe okay but mains again writing skill development ta sei type re hochi okay so seita apna dekhibe then you go for your test series both prelims and main okay if you properly and sincerely follow these three steps and the fourth one if possible jodi sango mane bhalo milu chandi ta auri bhalo okay tahale apana you will be successful sir kiche nai okay success is basically your hard work plus bahut jana konti luck okay it of course philosophical off topic but what is luck luck ro definition kona luck is basically a function of your deeds apana karma ro ja guru karchanti seita ro phalata apana seto milu seita hala luck लक एमती ना कि कोटोडे आसी जाउची तेनु दैट इज बेसिकली जदि हम ताकू इफ यू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा इट इज बेसिकली द थ्योरी ऑफ कर्मा मु कोन करची आगुरु सो ठीक टाइम रे ता फलटा मते मिलिबो भलो खराब जा भी करता है ओके तो दैट इज लक लक इज नॉट समथिंग लाइक खु मंदिर जे कि कोन गोटे पूजा कर दी तो लक आसी गला नहीं अपन जदि इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा सो यू वॉच व्हाट यू आर डूइंग ओके इट इज अ जनरल थिंग एट एग्जाम स्पेसिफिक नो सो study proper preparation plus opportunity plus luck ए तीनटा जिंस हो गले सक्सेस टा आसीजो सो वी आर concentrating mainly on without preparation without coaching not without preparation without coaching can we crack civil services exam 100% you can crack and in today's world of information technology okay you know coaching is as I told you is not possible for civil services what can be done is mentorship अपन जतरे कोनोसी जागा को भी जिबे गोटे कोचिंग सेंटर को जिबे क्लासरूम कोचिंग रे अपन देखिबे बहुत प्रकार पिला थांती देयर बी सम बेसिक स्टूडेंट्स हु बेसिकली ताकर आईडिया नहीं तो ताको बेसिक लेवल रो पढ़ा पे पड़िबो के जन छिबे किछि प्रिपेयर करिके आस्ते सो देयर बी यू नो हेटेरोजेनस
composition of generally every class. Okay, तेणु से हिसाब रे आपण निजे घरे बसिकी भी सेटा आपण जदि किछि कंस्ट्रेंट्स अछि आपण जीवा पे चाहनंती और यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम और अदर रिसोर्सेस देन एमती किछि नै कि मु कोचिंग लेनी तुम चांसेस कमी गला मोटे नो एही तीनटा जिंस घरे बसिकी हे परिबो टेक्स्ट बुक तो आपण किनिबे टेक्स्ट बुक उडा बहुत उडा भी पीडीएफ्स अवेलेबल अछि जदि आपण से हिसाब रे भी इफ इट इज ओके फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम हैंडहेल्ड डिवाइसेस दैट आल्सो यू कैन स्टडी ओके then previous year question again openly available in the net again if you want to have a printed copies also you can have जो कहली new visual publication तो भलटा कोन ना सी आपनकर chapter wise question ओडा देछि from 1979 to 2017 latest edition जोटा and then test series again freely available तो जने जदि चाहूची खाली इंटरनेट कनेक्शन अछि त पाखरे आ गोटे हैंडहेल्ड डिवाइस अछि कंप्यूटर नथिले भी चलिबो ओके गोटे एंड्रॉइड स्मार्टफोन अछि व्हिच इज नाउ कमिंग अराउंड 3-4,000 5,000 रे बडा स्मार्टफोन मिलछि सेति की इनफ प्रिपरेशन पई ओके ए तीनटा तो हे गेला फोर्थ अपन देखंतु पाखा बाकी जे पिला अछंती जो भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज देखंतु ओके जत्ते भलो जत्ते छोटो जत्ते बडो हिथौ सेथरे किछडा पिला थिबे जे कि निश्चित भाबरे सिविल सर्विस में प्रिपेयर करथिबे मे बी ताको अपॉर्चुनिटी मिलने की कोन जो माने हेई परले से माने गोटे कोठी जाई पढले ओके बट एबे आपण घरे रहि कि भी आराम रे पढी परिबे मेक ए स्मॉल ग्रुप 2 to 3 स्टूडेंट्स करो ओटे 3 मैक्सिमम एंड यू स्टार्ट प्रिपरेशन बी सिंसियर टू योरसेल्फ फॉलो दिस स्टेप्स एंड सक्सेस विल बी यस ओके आपण करी सक्सेस टा हो सक्सेस विल बी योर्स एंड जस्ट रिमेंबर दैट थिंग सक्सेस रो बेसिकली योर प्रिपरेशन प्लस द opportunity सब वर्ष आसुची प्राय एंड थर्ड इज लक and luck as I told you is a function of your karma तो सेटा ता पई आपण बेसी किछ कर परिबेनी जोटा करि परिबे से थरे लागंतु जोटा की हला your preparation in the first 3 steps if you take care that this preparation is good enough then mostly you will be successful another important thing that I would like to say eta to hela prelims main kotha interview the role of interview again I'll make a separate video for that role of interview I'll just give you an example OPSC 2016 results upon जब देखिए rank 1 और rank 2 so you understand that the fundamental difference between rank 1 and rank 2 was the interview marks difference जो rank 1 हेले और rank 2 हेले okay although written marks यदि अपन देखिए rank 2 करो generally बहुत अधिक written marks थला okay so what I'm trying to say interview को केबे भी ताको neglect करिबेनी proper interview जोठी कि आपणकर ओके इंटरव्यू डज नॉट मीन कि किए आसिक इंटरव्यू नौचंदी बेसिकली आपणकर जो रहुची जो त्रुटि उडा सेगुडा बाहर करि परचंदी कि नहीं दैट इज मोर इंपोर्टेंट ओके बिकॉज़ एनीथिंग अंडर द सन मे बी आस्क्ड ओके इट्स नॉट दैट पांच जण बसथिबे आपण कोन पचार देले आपणकर जो प्रोफाइल एनालिसिस टा केमती होची एंड दिस इज अ साइंस ओके पर्सनालिटी डेवलपमेंट इट्स अ कंप्लीट साइंस ता पई बहुत गुडे सॉफ्टवेयर आउ आपणकर algorithms भी डेवलप हेची जोडा ओपन सोर्स भी मिलुची ओके तो सेमिति किछुडा में बाहर करी कि जेमति कि मैक्सिमम आपनकर पर्सनालिटी सेठी तो पर्सनालिटी डेवलप हे परिबोनी मासे 2 मास रे कि 15 दिन रे आमे रेडी करि परिबो आपनको इंटरव्यू पे तो इंटरव्यू प्रिपरेशन ता तार बहुत गुडे स्टेजेस अछि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज इज द बायोडाटा और द डीएफ स्टेज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हैला तो ए जो डीएफ टा आकु जतले भरिबे एथर दीटा जिंस इंपोर्टेंट गोटे आपन जो हॉबीज उडा लिखुचंदी यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट आपनकर स्कूल कहा ना रे हिची कॉलेज रो इंसिग्निया सिंबल जोटा थाए एवरीथिंग रिलेटेड टू योरसेल्फ निजो जा करिचंदी सेटा जानिबार अछि दंतो आपन गोल्ड मेडलिस्ट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रो इंसिग्निया पचर हला आपन जाननांती तो कोन इंप्रेशन ता सेठी होबो ये हला गोल्ड मेडलिस्ट बट ही और शी डज नॉट हैव द इंसिग्निया ऑफ द यूनिवर्सिटी ठीक अछि अच्छा यूनिवर्सिटी जहांकर ना रे हिची जदि हेतिबो सेमती ताहले तांकर कोन कंट्रीब्यूशन थिला सेटा भी जानियार अछि आपन को होम डिस्ट्रिक्ट ओके आपन जदि निजो डिस्ट्रिक्ट टाको देखिबे जनरली ओडिसा जो बनसन तांका पई कहूची होम डिस्ट्रिक्ट में आपन डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल अछि तो कटक हैला तो हमर katak.nic.in किछ ओडे थिबो द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पोर्टल से थ्रू जेते इंफॉर्मेशन सेटा प्रॉपर्ली गोटे खाता रे लिखवा स्टार्ट करके ताको पढिया स्टार्ट करन ओके सेटा गोटे हला निजो ऊपर मैक्सिमम व्हाई आउ केतेटा कॉमन क्वेश्चंस ठीक अछि ओपन डोमेन रे भी हमरो आरोहन रो गोटे डॉक्यूमेंट अछि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू यू कैन सर्च एंड यू कैन डाउनलोड दैट ओके सम कॉमन क्वेश्चंस व्हाई you want to join civil services
Okay, you have done engineering in electrical engineering, but you have taken optional as public administration and sociology. Why? These are general questions. Kahi ye optional nelle? Okay, kahi ye service select kale? Especially upon jodi technical branches ru asuthibe, doctor heitibe, engineer heitibe, chartered accountant, lawyer heitibe, upon sethi okay serve kari parthante better. So seta interview classes we will discuss in detail. Kintu seta mind rakhibar achi, mu kon answer debi. And don't give a outlandish answer, right? Serve kariya pai chahunchi desa pai. Okay, if apan jodi postman bhi hejibe, aren't you serving the nation? Everyone serves the nation in his or her own capacity. So seita got a very vague answer ki want to serve the nation. Particular apan generally kahi ki join kariya pai chahunchi civil services. Ke janok pai job diversity hai pare. There have been many students jo mane ki bahut hi bhalo mane much higher pay ku chhadi ki aschanti au civil service join karchanti. To semane diversity koi paribe. GA first timer aguru employment nahi fresher CA join करछन तांको अलग reason है परे जोटा reason सेटा कहबे they are very senior people आराम रे आपण मिछटा धर देबे तो जदि मते social prestige पई मु join करूची ओके social status पई which is again a social construct तो मु कहबी सेटा एटे prestige अछि perceived prestige अछि एथरे security of tenure अछि. This was one of the questions in 2016. A security of tenure जेतले कोहा जाउची ताले किछि जण इंटरव्यू बोर्ड रे पचारले कि ता माने आपण गोटे टाइप रो कॉम्प्लिसेंट हो पे चाहउचंती इनएफेक्टिव हो पे चाहउचंती कि जहा काम करि के न करे जॉब ता रहला नहीं ताको प्रॉपर्ली टैकल करिवार अछि. जेतले मते पचारला मु कहली कि हां सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर गोटे मोर मेजर इशू. सो सेमान मते पचारले से हिसाब रे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ता ता माने आपण चाहउचंती कि न काम करि कि सैलरी नेबे इनएफिशिएंट ओके सेमती सेही टाइप रो आपण जॉब चाहउचंती नहीं. Okay, security of tenure is one of the fundamental, okay, pillars of public service. Why? Because if there is no security of tenure, then without any fear or favor, kamata kari habani. Okay, jemti private sector re hue. Private sector re jodi employee januchi ki boss or management bhul karuchandi, se kichi koi paribani. Unless he has some kind of financial backing, se job chadi paribani. Thik achi, if the management says sun rises in the west, thik achi, sun rises in the west. But se jinsa ta jodi kon bhulbal hela, takar shareholders तांकर जो माने रिलेटेड टू दैट कंपनी से माने हैरान हेबे. इन पब्लिक सर्विस से जिनसटा यदि हबो ताले जनरल लोक हैरान हेबे. सो सेठी यस मिनिस्टर कहया जगह रे एमतिया लोक दरकार जे कहि परियो नै आपन जे कहजनी भूल हु कैन गो अगेंस्ट द पॉलिटिकल एडवाइस. आजकल तो लोक सेंति कम अछंती बट एनीवे सेहिति पई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टा दरकार एटलीस्ट जे आपन को मैक्सिमम कोन करियो दे विल ट्रांसफर यू आपनकर चाकरी तो के नै परिबेन कि आपन सैलरी बंद हिजन. सो आंसर टा से हिसाब रे होबार अछि राइट. So that we will see later. You prepare for civil services interview. UPSC calls it a personality test. As you know, personality cannot be developed in, let's say, 1 week or 1 month or 2 months, right? It's an ongoing process, lifetime process. So be aware about your own surroundings, your school, your college, your university, your company, if you're working, right? Those things you have to prepare. Now, classroom mein prepare that we'll see. So, district, state, and things related to you. Suppose your father is working in a particular company, you should know about those things. Okay, so company ra kama kono. Suppose your mother, okay, is a professor in psychology. Okay, then you should have basic idea, right? So, a type of jinsa apan tike dekhiar achi. Interview also. Don't think that mains result baharibo interview ପାଇଁ prepare karibe. Okay, it's not exactly interview. It's a personality test. Personality ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ undergraduates ଅଛନ୍ତି, those who are just starting their college career, make sure that you take part in co-curricular and extracurricular activities. NCC hela it has a very big effect, very strong effect, okay, in the civil services interview. That means you have used or utilized your graduation years in a productive manner. ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ କେତେ ଜଣ academically inclined ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ research papers ସେଗୁଡ଼ା କରି, that's fine, but जहाँ भी हो किसी co-curricular किंवा extracurricular activities आपनकर थिबा दरकार. Okay, so take all these things into account and prepare well. So again I'll reiterate what was the fundamental question I started this lecture, that is, can we prepare for civil services without coaching? Answer is absolutely you can prepare. Not only you can prepare, you can succeed also. There have been many cases in UPSC, also in OPSC, where students have succeeded without any kind of coaching. These three things which I told you, textbooks, previous year question and test series, all are available, all are accessible openly. So that is basically free of cost. Right?
So you prepare, give sufficient time, have confidence in yourself. Okay, I will say you 3 P's ko mane rakhibe, right? Coming to evaluation of answers. Now, in case you want to write something and get it evaluated, okay, basically you can ask your mentor to do that. If that is not possible sometimes due to various reasons, you can send it to me, 9437002210. Okay. At last, I'll tell you something about me. I mean, I'm Dr. Sohag Sundar Nanda. I'm an ex-international civil servant. I was with the United Nations. I was posted in Macau in IIST, International Institute for Software Technology. And after completing my PhD, I started my own venture, that is Aarohan classes. So, even those who are interested in international civil services, also you can try for that. Okay, well, but the minimum is that you have to have your masters. Okay, so and you can go to the UN job portal and you can, okay, that is their UN job portal. You can have a profile and you can also apply for international civil services, right? So best wishes for preparation for civil services. Any doubts, any queries, I'm always available on WhatsApp. You can WhatsApp me, or in case you're not using WhatsApp, then in that case you can message me. Okay, best wishes.